हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट एक्सप्रेस। ये आपके लिए मेरे एक नई शुरुआत है। अगर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ भी मतलब 1% भी हेल्प हो सकता है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। और अभी तक नीट ओरिएंटेड रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया है और ये चलते रहेगा। प्लस इसके साथ साथ भी हर बायोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चंस भी आने वाला है। एंड अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, 2-3 दिन के अंदर ही अंदर मैंने आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नीट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है फिजिक्स पेपर का हैक। फिजिक्स पेपर नीट 2026 में कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो मैंने हैक कर लिया। बस आप लोग इंतज़ार करिए और चैनल में जुड़े रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट MCQ for biological classification. फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दोनों लिस्ट के अंदर मैच कीजिए और क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। लिस्ट ए में है राइजोप्स, उस्टिलागो, पुकिनिया एगारिकस एंड लिस्ट 2 में है मशरूम, स्मूथ फंगस, ब्रेड मोल्ड एंड रस्ट फंगस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, मतलब ये दोनों लिस्ट के आप मिल करिए और सही आंसर चुनिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is correct about viroids? They have a free RNA without protein coat. They have DNA with protein coat. They have free DNA without protein coat. And lastly, option D, they have RNA with protein coat. आप सही आंसर चुनिए और आपका आंसर कमेंट में लिखिए। आज का इस वीडियो में मैं बस ओनली क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और इसका आंसर कल ही आपको मिलेगा शॉर्ट में नीट एक्सप्रेस चैनल पर एंड नीट एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल पर ऑल्सो। तो जुड़े रहिए। और ये जो क्वेश्चन आज दे रहे हैं ये लगभग PYQ ही है और ये सब क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट is called plasmogamy. Organisms that depend on living plants are called saprophytes. Option C, some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called sheath cells. And the last option, fusion of two cells is called karyogamy. Let's move to the next question. Which of the following statement is incorrect? A, morels and truffles are edible delicacies. Claviceps is a source of many alkaloids and LSD. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. And the last option,
Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. Next question. Select the wrong statement. Cell wall is present in membrane of fungi and plantae. Option B. Mushrooms belong to Basidomycetes. Option C. Pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. And option D. Mitochondria are the powerhouse of the cell in all kingdoms except Monera. Let's answer the right answer. Okay, move to the next. In Whittaker 5 kingdom classification, eukaryotes were assigned to 2 to 5 kingdoms, 4 to 5 kingdoms, 3 to 5 kingdoms, and all the 5 kingdoms. Choose the right option. In the 5 kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria, and methanogenic archaebacteria? Option A, it's Plantae. Option B, Protista. Option C, Monera. And option D, it's fungi. Okay, let's move to the next. In 5 kingdom system, the main basis of classification is option A, structure of nucleus. Option B, mode of nutrition. Option C, structure of cell wall. Option D, asexual reproduction. Next question, number 4. In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms if the 5 kingdom system of classification is used? Number 1 is Plantae, number 2 fungi, number 3 Protista, and number 4 Monera. Choose the correct option. Okay, it's a too much tricky question. Let's talk about it. Rohit found an organism with cellulosic cell wall and tissue system of body organization. In which kingdom will you place this organism according to Whittaker classification? Kingdom Plantae, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia, and Kingdom Protista. This is a too much tricky question. If you answer this question, biological classification is in your hand. Next question. Identify correctly matched pair. A. Protista, it's a cellular body organization. Or option B, fungi, a eukaryotic structure. और ऑप्शन सी एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है या नहीं. ऑप्शन डी मोनेरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है. आप चूज करिए इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on which? Presence or absence of a well-defined nucleus, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of body organization. Choose the right option. 2 kingdom classification system was given by whom? A. Aristotle, B. Whittaker, option C is Linnaeus, and
ऑप्शन डी बेंथम एंड हुकर। आप तो जानते ही हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बताया, और वो ऑप्शन ऑलरेडी ओमिटेड हो जाएगा, रह जाएगा ऑप्शन 3। अब इन तीनों में से अब सही ऑप्शन चूज करिए। लेट्स मूव टू द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा से कुछ खास क्वेश्चन चुन चुन के आपके लिए उठा के लाया हूँ, कुछ खास किताब से। सभी के पास हर किताब नहीं होता है, क्योंकि इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स गो। किंगडम मोनेरा माइकोप्लाज्मास, इसका लैक ऑफ सेल वॉल और हैव ए सेल वॉल, are sensitive to penicillin or not, and the last option, are usually as big as most of other bacteria। आप लोग सही ऑप्शन चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, which will be the right answer? Option A haplosperm, option B mycelium, option C holdfast, and option D heterocyst. Let's move to the next. Rod shaped bacteria are bacilli, option B cocci, option C spirilla, and option D all of the above or all of these. Next, mucilaginous sheath is associated with blue-green algae, heterotrophic bacteria, chemosynthetic autotrophic bacteria, or all of these. Blue-green algae are included in which of the following groups? Bryophytes, prokaryotes, protista, or fungi? Choose the right option. Which of the following bacteria are involved in production of curd from milk? Option A, chemosynthetic autotrophic bacteria. Option B, heterotrophic bacteria. Option C, photosynthetic autotrophic bacteria. And the last, option D, all of these. Choose the right option. Let's move to the next. Which of the following bacteria are involved in the production of antibiotics? मतलब हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन होता है तब जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं वो बनाने में कौन सी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी all of these. Move to the next. Organisms found in extreme temperature are cyanobacteria, archaebacteria, fungi, eubacteria. Choose the right option. Next. Which of the following lacks a nuclear membrane? It's Chlamydomonas, option A, or option B Nostoc, or option C Agaricus, and lastly option D Aspergillus. Select the incorrect statement. Bacteria are cosmopolitan in nature.
Some bacteria are autotrophic. All bacteria are heterotrophs. The genetic material of bacteria is not organized. Choose the right option. Archaebacteria differs from other bacteria in or by having a peptidoglycan in their wall, absence of peptidoglycan in their wall, option C being prokaryotic, option D absence of nuclear membrane. Choose the right option. Next, kingdom Protista. Which of the following cannot be included in kingdom Protista? Chrysophytes, lichens, or slime molds, or chrysophytes and lichens दोनों ही. Choose the correct option. Slime molds are haploid. Protozoans lack cell wall. Dinoflagellates are immotile. Pellicle is absent in Euglena. Study the given group with characteristic feature and choose the right option. Let's अब ये क्वेश्चन देखने में आप लोग को तकलीफ नहीं होगी. Diatoms, they are chief producers in the ocean. Dinoflagellates, they have a protein-rich layer called pellicle. Slime molds, they are saprophytic protists. Protozoans, they are primitive relatives of animals. Euglenoids, their cell wall has stiff cellulose plate on the other surface. Which of the following two pairs are incorrectly matched? मतलब ये 5 ऑप्शन में से कौन सा पेयर गलत मैच्ड है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक इमेज क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड. आपको शायद आप अभी ठीक से देख पा रहे हो. हाँ, इट्स ओके. Refer to the given organism 1 to 4. Select the correct statement regarding them. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये. बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि मैं भी नीट दे चुका हूँ. इसलिए ये क्वेश्चन याद रखना. नीट 2026 में नीट का क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तब नीट एक्सप्रेस चैनल का नाम याद कर लेना. ठीक है बच्चों? सॉरी फ्यूचर डॉक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. चलो. द एमीबॉइड पैरासाइटिक प्रोटोजोन इज एमीबा, बी पैरामोसियम, सी एंटामीबा एंड डी ट्राइपानोसोमा. चूज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as zoospore, conidia, aplanospore, oxospores. Choose the right option. ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है. ये भी आप लोग
दिमाग में सेट कर लेना। एमडी सर की बातों में ब्रेन में सेट, ठीक है। मैं भी उसका स्टूडेंट रह चुका हूँ। Eggs commonly known as sac fungi are mostly multicellular organisms. It includes Y and Z. Select the correct options for X, Y and Z. X, Y, Z इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चूज करिए आप। Move to the next. When a fungus reproduce sexually, dash, a compatible mating types come together and fuse. Then what will be the right option? 2 haploid hyphae, 2 diploid hyphae, 1 haploid and 1 diploid, or none of these? अच्छा, आप लोगों के लिए 38 क्वेश्चन देखिए आप। Let's move to the next, future doctors. Zygospore formation occurs in option A, mucor, option B, claviceps, option C, neurospora, option D, agaricus. Next question. Absorptive heterotrophic nutrition is exhibited by option A, algae, option B, fungi, option C, bryophytes, option D, pteridophytes. Next question. Which of the following is or are correct regarding fungi? They are eukaryotic, they are chemi-organotrophic organisms, they bear no chlorophyll, and all of these. Next question. Mycorrhiza exhibits the phenomenon of parasitism, B, symbiosis, C, amensalism, and D, endemism. Choose the right option wisely. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूव टू किंगडम प्लांटी. Which statement is or are correct for members of kingdom plantae? Option A, they are exclusively autotrophic. All members have eukaryotic structure. Option C, possesses cellulosic cell wall, and option D, all of these. Next, kingdom Animalia. Select the incorrect statement regarding the members of kingdom Animalia. They are heterotrophic eukaryotic organisms. They are multicellular organisms lacking cell walls. They directly or indirectly depend on plants for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserve as starch. Choose the incorrect statement. Next question. Animals store food reserve in form of glycogen, cellulose, starch, and option D, both A and C. इजी क्वेश्चन है ये, सभी को आंसर देना है इसका. Let's move to the last part
of today's question सेशन। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस के ऊपर क्वेश्चन है। वायरसेस पोजेस ऑप्शन ए राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन organelle for its vital mechanism. Option C, either DNA or RNA, and option D, none of these. Next question. Which of the following statement about viruses is correct? Viruses possess their own metabolic system. Option B, all viruses contain both RNA and DNA. याद रखना, कोरोना वायरस में क्या था, आरएनए या डीएनए? क्यों बार बार रेप्लिकेट कर रहा था कोरोना वायरस? याद करो, याद करो। कोरोना वायरस में आरएनए था। ऑप्शन सी, viruses are obligate parasites. Option D, nucleic acid of viruses is known as capsid. Let's move to the next. Viruses have DNA enclosed in a protein coat. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही वेरी, क्या बोले उसको, हाई यील्ड क्वेश्चन है ये। याद रखना, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। मतलब आप अगर किसी ने 30 इयर्स या 35 इयर्स पेपर बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन उसके पास ब्रेन में सेट रहेगा। वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, और बी प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सिंगल क्रोमोसोम, ऑप्शन डी बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, सॉरी विथ प्रोटीन कोट। Move to the next. Select the right statement. Prions consist of abnormally folded proteins. Infective constituent in viruses is the protein coat. Viroids lack a protein coat. Viruses are obligate parasites. सही, मतलब आंसर सही लेकिन स्टेटमेंट इनकरेक्ट होना चाहिए, याद रखना। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। Lavonosky, he named virus. Stanley, viruses could be crystallized. Pasteur, contagium vivium fluidium. Beijerinck, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। द जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोजाइक वायरस इज एसएसडीएनए, एसएसआरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए मतलब डीएसआरएनए और डीएसडीएनए। व्हिच विल बी द राइट ऑप्शन? Next question. Certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent called option A virus, option B viroid, option C prions, and option D both B and C. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। Lichens are good indicators of landslide, pollution, soil erosion, and
soil remediation. Choose the right option. ओके फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के लिए बस इतना ही। 2-3 दिन के अंदर नीट एक्सप्रेस चैनल लेकर आ रहा है नीट का पेपर, मतलब नीट का फिजिक्स का पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक प्रॉपर हैकिंग वे फॉर ऑल ऑफ यू। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर वो वीडियो आपने देख लिया, अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी कम से कम 120 मार्क्स आ ही जाएगा, और जिसने मिनिमम 70 to 80% फिजिक्स पढ़ चुका है ऑलरेडी, उसका 160 आउट ऑफ 180 कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ। बस वेट करना एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे। तैयारी जारी रखना और हर वक्त यही सोचना, वो वाइट कोट आपको बुला रहा है उसको पहनने के लिए। गुड बाय, सी यू सून।